Hello learners, I am Dr. Anuj Sharma, working in Center for Advanced Studies, AKtU Lucknow. It is the research driven in campus institute of AKtU Lucknow. So, we are discussing the topics of strength of material. So, today's topic of discussion is springs. So, this topic lies in the unit number 3 of this subject, and already we have 5 units of this subject. So, today we are going to start the third unit of this syllabus, and spring we all know it is very important topic as far as the daily use is concerned, whether it is of industrial applications or it is homemade applications. So, in many fields of daily use we generally use these springs. It is very important element we should say of the strength of material field. So, followings are the outlines of my today's presentation. We will discuss the introduction of the springs, what is the importance of these springs, and different types of springs we will study, we will discuss, and the deflection of springs by energy method. So, it is very simple method, and we will see how the deflection of spring can be calculated using energy method. Then we will discuss the composite springs, or we can say the combination of springs. In different types of categories it can be arranged. So, we will discuss the springs in series and parallel. Then we will take small numerical problem to understand the concept of spring. So, अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो सभी लोगों ने हम लोगों ने स्प्रिंग देखी है. सो स्प्रिंग इज बेसिकली एन इलास्टिक बॉडी और resilience member to absorb shock due to sudden or gradual loading. Almost in many cases it is because of sudden loading, but we cannot ignore the gradual loading also by the deflection. So, स्प्रिंग बेसिकली है क्या? स्प्रिंग जब हम लोग देखते हैं कि स्प्रिंग का मतलब है, बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि स्प्रिंग मीन्स कि इस तरह का कुछ पार्ट होगा, दैट वुड बी स्प्रिंग. सो इट इज़ नॉट करेक्ट. सो दिस इज़ नॉट द ओनली स्प्रिंग. सो स्प्रिंग इज़ अ बॉडी, इट मे बी ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप की हो सकती है, इलास्टिक होनी चाहिए कि वेन एवर वी अप्लाई द लोड ऑन द बॉडी it absorbs some energy and gets deflected, उसकी shape change होती है, and upon the removal of load or after removing the shocks it can release the energy. So, storing and restoring is a important phenomena of this spring. तो that body is known as the spring. Spring कोई भी हो सकती है, किसी भी shape की हो सकती है, और उसका काम यही है कि it absorbs the energy and release the energy depending upon the situations or circumstances in which we are using these elements. So, these are used to store the energy and to restore the same slowly or rapidly. दोनों ही चीज़ें, जैसे हम लोग बाइक पे जा रहे हैं and if some the broken roads are there, some pits are there, then bike enters into the pit or wheel enters into the pit, what happens? So, due to the gravity, or you can say due to the inertia, sometimes what happens, we feel a shock, एक shock मिलता है. वो जो compressors हैं, जो shockers हैं, जो shock absorbers हैं, वो जो spring है वो compress होती है. Then as soon as it bike comes out from the pit, what happens, it tries to regain its original shape. वो जो body है, जो spring की जब हम बात कर रहे हैं, वो एक helical spring होती है. तो springs may be of different types, we will discuss here all the different types of springs. So, spring का मतलब कि वो restore कर रही है, store कर रही है energy और restore कर रही है, and depending upon the situation either slowly or rapidly, sometimes it is the requirement of that situation कि we have to release the energy as soon as possible, and sometimes it can take some time to come to the original shape and size slowly, so that the energy can be released slowly, or we can get the desired effect for what the spring was designed. So, some examples we are going to discuss. कुछ examples हैं जहाँ पे generally हम spring को use करते हैं. पहला, to absorb shock or impact loading as in the
कैरेज स्प्रिंग्स। तो जो कैरेज स्प्रिंग्स हैं, जैसे जो भी गाड़ियाँ हैं या वैगन्स हैं, वहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है, तो वो शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर शॉक्स को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो व्हाट दे विल डू, दे विल क्रिएट सम क्रैक्स, वाइब्रेशंस आएंगे, कुछ क्रैक्स जनरेट करेंगे, एंड ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ दैट बॉडी और दैट कंपोनेंट और दैट पार्ट, सो दैट पार्ट में फेल। तो हम लोगों को वो जो शॉक्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वी हैव टू डैम्प दो वाइब्रेशंस, तो उनको एब्जॉर्ब करना है शॉक्स को। सेकेंड important field of application of the spring may be to store energy in the clock springs. So these are some examples. clock springs होती हैं जो हम घड़ी के अंदर यूज़ करते हैं, तो वो एनर्जी को स्टोर करते हैं और फिर वो स्लोली अब तो सब बैटरी ऑपरेटेड वॉचेस हम लोग पहनते हैं। अदरवाइज़ पहले क्या था कि हम लोग स्प्रिंग एनेबल्ड वॉचेस यूज़ करते थे, तो उसमें वो जब हम लोग उस नॉब को ट्विस्ट करते हैं, रोटेट करते हैं, तो इट एब्जॉर्ब्स सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग स्ट्रेन एनर्जी, एंड देन अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ, क्योंकि उसको हम कैलिब्रेट करके रखते हैं, तो वो 24 आवर्स में वी यूज़ टू रोटेट और स्टोर द एनर्जी इन द स्प्रिंग वंस। तो वो उस तरीके से कैलिब्रेट होती थी कि वो स्लोली एनर्जी रिलीज़ करती थी, और वो जो हमारी क्लॉक थी, इट रन्स फॉर 24 आवर्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ टू अप्लाई फोर्सेस एंड टू कंट्रोल मोशंस एज इन ब्रेक्स एंड क्लचेस। तो जो हम गाड़ियों में जो यूज़ करते हैं ब्रेक्स और क्लचेस, उसमें भी स्प्रिंग्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो क्लचेस हैं, जब हम लोग पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं, दोज हु आर मैकेनिकल इंजीनियर्स दे कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज it is the basic feature of an automobile कि we have to transmit the power from engine to the brake shaft, then brake shaft to the wheel through the gear system। तो उसमें हम लोग एक क्लच यूज़ करते हैं, जो क्लच का काम यही है कि वो एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट ऑफ द गियर बॉक्स विद द व्हील्स। तो हम जैसे ही उसको एंगेज करते हैं तो वो स्प्रिंग उसको प्रेस करके रखती है, और बिकॉज ऑफ दैट स्टिकिंग और वी कैन से द कंप्रेशन कॉज्ड ड्यू टू द स्प्रिंग, वो उस पर एक प्रेशर डाल के रखता है व्हील पे, दोनों व्हील एक साथ चिपकते हैं, और फिर इफ़ इंजन शाफ्ट इज रोटेटिंग देन ऑब्वियसली थ्रू गियर सिस्टम द व्हील वुड also try to rotate. So there may be some slippage, but we can optimize that slipping. So to apply forces and to control motions, तो वहाँ पे हम स्प्रिंग यूज़ करते हैं, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। एंड टू मेजर फोर्सेस एज इन स्प्रिंग बैलेंस, आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे स्प्रिंग बैलेंसेज आते हैं, और जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती है, मतलब कि मिलीमीटर्स मिलीग्राम्स या जो माइक्रोग्राम्स में, इफ़ वी डोंट वांट दैट मच ऑफ द accuracy, then we can use these kind of spring balances. So they are calibrated with the weight and we can measure the required weight. To change the variations characteristics of a member as in flexible mounting of motors, so motors also create the vibrations, तो उसमें हम उसकी जो characteristics हैं अगर उनको vary करना चाहें तो वहाँ पे भी हम लोग जनरली स्प्रिंग्स को यूज़ करते हैं। सो दीज आर सम एप्लीकेशंस। अब स्प्रिंग्स कितने तरह की होती हैं, तो स्प्रिंग्स मतलब मैंने आपको बताया केवल ये स्प्रिंग्स नहीं होती हैं, स्प्रिंग्स में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्प्रिंग जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, सबसे ज़्यादा जो हम लोग देखते हैं वो होती है हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग आई विल शो यू थ्रू दिस फिगर। So it may be of two types. Helical, why we call it as helical? Because helical means कि there should be a circular and there should be a helical. If we give the linear motion to a circular trajectory, then what we can get? We get the helix we get, and that is the helical shape we get. So helical spring may be of two type. One is the open coiled helical spring, another is closed coiled helical spring. So if we will see with the help of this diagram, we can easily differentiate these two types of springs. So this spring, this is the open coiled helical spring and this is the closed coil. So first of all we should try to understand what are different terminology which we are using here. So these are the coils actually. So let us say if we draw it, so it is going like this. So these are coils actually. So this is one coil starting from here and this is the one coil. So it is made up of some wire, एक वायर से बनी हुई है। तो इस वायर का जो डायमीटर है, let's say the diameter is small d, this is the mean called diameter
let us say it is D. So, we will discuss all these things. So, what is the meaning of open coiled and closed coiled? So, it is important. So, इसको ओपन क्यों बोलते हैं, इसको क्लोज क्यों बोलते हैं? तो ये जो हमारे आप यहाँ पे दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दो कॉइल्स हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव कॉइल्स हैं, उसके बीच में काफ़ी गैप है. यहाँ पे जो है वहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं है. तो ये तो एक लेमन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि अगर गैप ज़्यादा है तो वो ओपन कॉइल होगी, और अगर गैप कम है या बिल्कुल भी नहीं है तो वो क्लोज कॉइल होगी. बट देयर शुड बी सम मैथमेटिकल क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई कि which spring is open coiled, which spring is closed coiled. So, we have to understand that. So, let us say if we draw this spring, the front view, so we are getting like this. So, these are the, let us say, the different planes of the spring. If this angle is less than 10 degree, let us say this is the helix angle. If this angle is less than 10 degree, then it is known as the closed coil. If it is more than 10 degree, in this case it is almost 0, or we can say 1 degree, 2 degree. So, this angle is, if it is, this angle is less than 10 degree, it means it is known as the closed coil helical spring. Helical means we are having the spirals, circular section with a lateral motion. So, this is the helical spring. So, these are two types of spring generally we use in the daily life most of the time. Another spring may be the leaf spring. जो लीफ स्प्रिंग है आप लोग अगर देखेंगे तो ट्रक्स के अंदर जो हम अगर उससे देखें ट्रक्स हैं, बसेज हैं, सो दिस इज़ द लीफ स्प्रिंग. सो ये जो लीफ स्प्रिंग है वो फ्लैट प्लेट्स होती हैं, और आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे हम इसको लोडेड करते हैं और यहाँ पे इसको हम सपोर्ट करते हैं. सो विद द डिफॉर्मेशन, जब यहाँ पे लोड बढ़ता है, लेट्स से P1 और इट इज़ P2, तो जब यहाँ पे लोड बढ़ता है ये स्ट्रेच होती हैं. अभी ये ऐसे हैं, फिर ऐसे होती हैं, फिर ऐसे होती हैं, फिर इस तरीके से होती हैं. तो इट मीन्स दे आर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी एंड दे आर रिलीजिंग द एनर्जी. सो इन डिस्कस और मैथमेटिकली वी विल डिस्कस इन दी सब्सिक्वेंट लेक्चर्स बिकॉज टाइम इज़ नॉट एनफ टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स हेयर मैथमेटिकली. Next spring is the torsion spring. So, torsion springs are this. जनरली हम लोग जितने भी हमारे क्लिप्स होते हैं, क्लिपर्स होते हैं, या फिर आपने देखा होगा जो हमारे पैड्स होते हैं, राइटिंग पैड्स होते हैं, उसमें हम क्लिप यूज़ करते हैं. जो हमारे स्टैपलिंग मशीन्स होती हैं उसमें भी हम इस तरीके से स्प्रिंग्स को यूज़ करते हैं. सो दीज स्प्रिंग्स आर द टॉर्जनल स्प्रिंग्स. सो वी अप्लाई द टॉर्क and we store the energy, we do the work and then we release that and it again regain its original shape. So, these are the torsion springs. Flat springs होती हैं कि flat plates होती हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अब ये flats, इसको हम spiral spring भी बोल सकते हैं, तो spiral shape में है. और generally these type of springs are used in the toys or some other instruments where we want to turn the key and we store the energy, and then upon releasing that hand from that key or while doing different operations they can release the energy. So, these type of springs generally we use in our daily life. So, now we will discuss the deflection of springs by energy method. So, for that we have to find out the delta, we have to use different standard nomenclatures for this. तो अगर हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल लेके देखें, सो लेट्स से दिस इज द स्प्रिंग, इनिशियल लेंथ में बी L, सो दिस इज द इनिशियल लेंथ, और आफ्टर द डिफ्लेक्शन द लेंथ इज L प्लस डेल्टा. सो इट मीन्स डेल्टा इज द डिफॉर्मेशन in this spring because of the application of this load P. So, axially we are applying load, we are trying to stretch the spring. So, let us say with the help of this load P, this spring has been stretched to L plus delta. So, we know from the conservation of energy, whatever work we are doing on the spring, that should be stored in the spring in the form of energy. So, that is the internal energy. So, from the conservation of energy everybody knows, so energy can neither be created nor be destroyed. So, whatever work we are doing on the spring or on any body, that must be stored in the body in the form of
internal energy. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो this is the external work and this is the internal energy. So, we have to calculate the work and we know that work is how much. So, if we draw this curve, so let us say on the x axis we are taking the displacement and on the y axis we are taking the applied load. So, applied load would be the function of x. So, because from the Hooke's law, so this load is directly proportional to the displacement. So, if we want to increase the displacement, we have to apply more force. So, P is directly proportional to x, and if we remove this sign of proportionality, one constant is introduced, that constant is k, this is the stiffness. So, here P is the function of x, or we can say P is equal to k x here in this situation. So, it means we have a linear relation, एक linear relation मिला हुआ है. So, as we are increasing the x, we have to increase the p to p, because k is constant. So, it means we are getting a straight line here. So, on the y axis we are getting, let us say at any point where the deflection is delta. So, we are considering this situation, इसको हम लेके अगर देखें तो for this point there should be a force, let us say this P is the force, this is the force. So, for this, from this relation P would be how much, that would be k into delta. So, for this situation how much force we have applied, k into delta. So, if we will see external work done, that would be equal to, either we can say the area of this curve under this line. So, that would be equal to the area of this triangle. So, that would be equal to half into base into height. So, half into base into height means base is delta, P is the height of this, and P is equal to k delta. So, when we will put this, so we will get work done is equal to half k delta square. So, this is the work, external work. So, the energy stored in the spring from the law of conservation of energy. So, whatever work we are doing on this, so that should be equal to the work, that should be equal to the internal energy stored within the spring. So, if we generalize this, so that would be equal to u is equal to half k into, if we write down in the terms of x or delta, so it would be equal to half delta square. So, this is the internal energy stored within the spring. So, this is the energy method, we can calculate the energy stored in the system. So, generally we do not use the spring in single applications, we may have different situations where we can use the springs in different combinations. So, composite springs we can see. So, here we can use the springs in two ways, one may be the springs in series, another may be the springs in parallel. So, in series we can see from this diagram. So, let us say we have two springs, one is k 1, another one is k 2, and we have put these two springs in series. So, one spring is this from here, another spring we have added to this, and we are stretching this spring with the load P. So, we have to calculate, can we replace these two springs by a single spring. So, that we have to see. So, let us say delta 1 is the extension of spring of stiffness k 1 due to load P. So, let us say the spring constant of this particular first spring is k 1, and with the help of this load we are trying to stretch these two springs with this load. So, let us say delta 1 is the elongation in this spring 1 and delta 2 is the elongation in spring 2 with the load P, axial load P. So, delta 2 is the extension and stiffness is k 2. So, if we want to calculate the total elongation in the composite spring, that would be equal to delta. So, let delta, so it means delta is equal to delta 1 plus delta 2. So, this is the total elongation. So, for series, for the springs in series we have to use this relation. Now, we know that delta is equal to delta 1, we have this formula P is equal to k into delta. So, if load is constant, so k 1 delta 1 and P 2 is equal to k 2 delta 2.
So, from here we can find out. So, let us say if you want to calculate delta 1, so delta 1 is equal to P upon K 1. So, from here delta 2 is equal to P upon K 2. So, we can put these two values here in this expression. So, we will get delta is equal to P upon K 1 and P upon K 2. So, we can get this relation. So, we can take P as constant from as a common from this expression, and in the internal side that would be 1 upon K 1 plus 1 upon K 2. So, let us say if we replace this spring, we can rearrange here, यहाँ से हम लोगों ने इसको rearrange किया. If we can rearrange P upon delta, ये delta इधर आया इसके नीचे. So, what we will get P upon delta is equal to 1 upon 1 plus 1 upon K 1 plus 1 upon K 2. So, if we replace this with the if we write it as 1 upon K E Q. So, it can be written as P is equal to, or we can say P is equal to delta upon this total term can be written as K E Q. So, this is the K E Q 1 upon K 1 plus 1 upon K 2. So, P can be written as delta multiplied by, or we can say here we can say delta multiplied by K E Q. So, what would be the equivalent stiffness constant for this composite spring? So, that would be here. So, that can be, if we know the value of K 1 and K 2 means spring constant of first spring and second spring, then we can find out the spring constant of the spring which is made up by putting these two springs in series. So, अगर हम लोग एक यहाँ पे spring design करें, let us say this is the true composite spring, और अगर हम यहाँ पे same load लगाएं तो इसका जो spring constant होगा that would be KEQ, और KEQ की वैल्यू क्या होगी, that would be 1 upon 1 plus 1 upon K1 plus 1 upon K2. इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें, so that would be equal to K1 plus K2, K1 upon K2 would be there, and here K1 K2. So, that would be equal to KEQ. So, this is easy to remember this formula. So, we can remember this formula in this way also. Now, next is the spring in parallel. So, if we talk about the springs in parallel, so these two springs are there similar as similar what we have taken in the previous slide. तो वहाँ पे जो K1 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो K1 है, इसका K2 है, वो हम लोग एक सेम लोड लगा रहे हैं P. तो यहाँ पे इन दोनों स्प्रिंग्स को अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसका KEQ मतलब इक्विवेलेंट जो स्टिफनेस कांस्टेंट होगा वो क्या होगा. अगर डेल्टा 1 एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग स्टिफनेस है, डेल्टा 2 ये है, और जो डेल्टा है वो इनका टोटल एक्सटेंशन है. सो इन दिस केस extension if it is horizontal, so in this case delta 1 would be equal to delta 2 in this situation, and second condition would be, so ये जो load है ये load ये दोनों spring मिल के share कर रहे हैं. इसका मतलब let us say the load shared by this spring is P1 and load shared by this spring is P2. So, it means P is equal to P1 plus P2. तो ये यहाँ पे दोनों ने शेयर किया, तो जो लोड है हमारा दैट वुड बी इक्वल टू P1 प्लस P2. सो फ्रॉम द सेम रिलेशन वी कैन राइट इट एज P1, P1 इज व्हाट, P1 इज इक्वल टू K1 डेल्टा एंड P2 इज इक्वल टू K2 डेल्टा. सो यू कैन टेक आउट डेल्टा एज कॉमन, सो दिस रिलेशन विल बिकम डेल्टा इंटू K1 प्लस K2. सो इफ यू कैन रीअरेंज दिस टर्म, P upon delta is equal to K1 plus K2. So, here if you want to write it as it, you can write this equation P into KQ into delta. So, this KEQ will become K1 plus K2. So, this is little bit simpler. So, we can add simply the spring constant. If we have 4 springs like this,
So, simply we can add K1 plus K2 plus K3 plus K4. So, likewise we can calculate the equivalent spring constant for the composite spring system. So, just to understand the concept, we will take very small numerical to understand the concept of springs. So, let us say we have this numerical problem. So, we have 3 springs connected in this particular manner. So, this is first spring, this is second spring, this is third spring, and we have arranged. So, here this is K1 spring and K2 K3 ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं और K2 K3 की जो कंपोजिट स्प्रिंग आएगी वो K1 के साथ सीरीज में है. सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वी हैव टू डिटरमाइन द टोटल इलोंगेशन. तो लेट K1 इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर मीटर, ये उन्होंने वैल्यू दे रखी है. K1 K2 K3 की हमको वैल्यू दी हुई है. उसके बाद अगर हम देखें तो अगर हमें इक्विवेलेंट स्प्रिंग निकालना है तो लेट से दिस स्प्रिंग सिस्टम कैन बी, तो ये वाली जो स्प्रिंग है इन दोनों जो पैरेलल में है इनको मिला के एक स्प्रिंग ये हो गया, ये वाली स्प्रिंग. सो K2, 3 मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दीज 2 स्प्रिंग्स एंड K1 एज इट इज. तो हमें जो कैलकुलेट करना है, लेट से K2 3 वुड बी हाउ मच. सो दीज 2 स्प्रिंग्स, दिस एंड दिस, these are in parallel. तो इनको as it is ऐड करेंगे तो K2 plus K3 would be the spring constant for this particular combination. So and KEQ overall, तो अगर हम overall की बात करें तो overall that would be equal to 1 upon first means this plus 1 upon second का, second मतलब अब ये वाली spring हो गई. So इसका वैल्यू कितनी है K2 plus K3. So you can put here. So that would be, now we have to just rearrange. So we have taken the LCM of this and we have rearranged this. We can now rearrange more. So KEQ would be equal to this much, K1 into K2 plus K3 upon K1 plus K2 plus K3. So these 3 springs we have added. So KEQ would be how much? That would be if we put the value we can get the 1.6 Newton per meter. So here you can see if we replace this system with a single, so it would be equal to like this. So one spring, this is P, so this would be equal to KEQ. So if we can replace all these springs by a single spring, so its spring constant would be equal to KEQ, that would be 1.6 Newton per meter. So thank you so much. Today we discussed very basic or fundamental information about the springs. In next lectures we will discuss the application of the springs and their mathematical analysis regarding the loading and strain energy stored in them. So thank you for listening.